Panchastavi is a peerless hymn of praise addressed to Kundalini. Shielded from the world, it was sitting in the beautiful valley of Kashmir, surrounded by the snow-capped mountain peaks. Kashmir Valley was once said to be a lake known by the name of Sati Sar. Panchastavi is a devotional collection of 5 hymns sung in the praise of Mother Goddess Tripura, the personified absolute Godhead of the world. It is the eternal source of super knowledge, Paravidya, bliss, Ananda, and even this whole cosmic creation. The super marvel, Mahamaya, creates and annihilates this world of sound and sense by the triple attributes of desire, Icha, perception, Gyan, and action, Kriya. Panchastavi contains in it the essence of the Tantric non-dualism. As per some scholars, the earliest reference to Panchastavi is found in the Saraswati Kantabharna of King Bhoja, which is thought to be composed between 1030 to 1050 AD. Hence, Panchastavi is composed earlier to it. Saundarya Lahari can be said as a sister volume to Panchastavi. The subject matter of these two compositions being similar, both these might have been composed simultaneously at the time when Kashmir was vibrating with Shaivistic monism, which has all along conceded an edge to Shakti over Shiva. It is said that Shankaracharya became a Shakti worshipper during his stay in Kashmir. The poet has maintained complete silence about his name, time, as well as the lineage in his composition. The Panchastavi book that is used here dates back to November 1940. This was first edition and was sold for 4 annas. Our grandfather, mother's father, Harishwar Kaul of Habakadal, Srinagar, used to chant Panchastavi of this book. So it is very precious. Our mother, Srimati Gauri Dhar of Habakadal, Srinagar, said that her dad used to chant Panchastavi whole night after lighting a lamp at Kheer Bhavani in front of the deity, Maharagna Bhagavati, for days together. Let's enjoy Panchastavi chanted by our mother, Srimati Gauri Dhar. Om Panchastavi Lagustava Pratma Om Namah Tripura Sundari Aindrasya Vishara Sane Siddharti Madhilala Tam Prabha Shoklim Kanti Manashnaga Rivashara Shatannati Sarvata Esha Sautrapara Hridye Ditiru Nashu Sada Achata Chindana Sesa Padestra Jyotirmai Vagmai Yamatra Tripusi Lata Tanlasa Tantu Sthiti Spar Dini Vagbije Prathami Tata Tav Sada Tamanmahe Te Vayam Shakti Kundalini Divishu Janana Vyaparava Dojama Jatvatam Puna Saprashanti Janani Garbheshvaka Tum Nara Drishtasa Brahmakar
वस्तु सहसा इति व्याहृतम् येनाको तव तवुषा अदपि द्वर्दे बिन्दुविना प्यक्षरम् तस्यापि ध्रुवमेव देवि तरसा जाते तवानु गृहे वाचा सूक्तिसुचार सद्रौमुचो निर्याति वक्त्राम्बुजा यत्नित्ये तव कामराजमपर मन्त्राक्षरं निष्कलं तत्सारसतमे वैति विरला कश्चिद्बुधश्चेद्भुवि आख्यानं प्रतिपर शैत्यतपसो यत्कीर्तयन् तो द्विजा प्रारम्भे प्रणवास्पद प्रणीतां नीतोचरन् स्फुटम् यत्सद्यो वचसां प्रभृति कर्णे दृष्टप्रवाहम्बुदे तत्तीर्येकमहं नमामि मनसा तद्बीजमिन्दुप्रभम् हस्तोर्वोऽपि सरस्वती मनगतो जाड्याम्बुवि क्षेत्तये गोशब्दो गिरिवर्तते स्निहितं योगं विना सेद्यदा एकैकं तव देव बीजमनघं सव्यञ्जना व्यञ्जनं कूटस्थं यदि वा पृथक्क्रमगतं यथवा ततं व्युत्क्रमात् यं यं कामं येन विधिना केनापि वा चिन्तितं जप्तं वा सफली करोति सहसा तं तं समस्तं नृणाम् मामे पुस्तकदारिणीमवैदां साक्षत्रजं दक्षिणे भक्तेभ्यो वरदान् पेशकलरां कर्पूरकुन्दो जलाम् उज्जम्बा भुजपत्रकान्तनयन स्निग्धप्रभा लोकिनी ये तामम्बमनशीलयन्ति मनसा तेषां कवे तं कुतः ये त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटला स्पष्टाभिरामप्रभां सिञ्चन्तीममृत द्रवैर्विशुरो ध्यायन्ति मूर्ध्नि सतताम् आशन्तं विकटस्फुटाक्षरपदा निर्याति वक्त्राम्बुजा तेषां वारिति वा रतिसुरसरि कल्लोललोलो निवर्त ये सिन्दूरपरा पुञ्जपीतां तत्तेजसां द्यामिमां मूर्वी चापि विलीन यावकरस प्रस्तारमग्नामिव पश्यन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्ते पशा मनङ्गजर क्लान्तत्रस्तकुरङ्ग शावकदृशो वशा भवन्ति सुपुटम् चञ्चत्काञ्चनकुण्डलां ददराम बद्धकाञ्चीस्रजं ये तां चेतस्तत् गते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वातिथ्यं
तेषां वैषमसु विभ्रमा दहरः स्वारी भवन् तेश्चिरम् आजात् कुञ्जरकर्णता तरला स्थैर्ये भजन् तेष्य आभरित्या शशिखण्डमण्डितजटा जूटां नमण्डस्त्रजम् बन्दूकप्रसवारुणाना बरदरां प्रेतासना द्यासिनी तां ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनाम् आपीनतुङ्गस्तनी मध्ये निम्नवले त्रयाकिततनुं तथरूपसंवेतये जातोपल्पवरे चिदेखितिभुजां सामान्यमात्रे कुले निशेषावनि चक्रवर्तिपदवी लब्ध्वा प्रतापो नता यद्विद्याधरवृन्दितपदा श्रीवत्सरा यो भव देवी त्वच्चरणा भुज प्रणिजा सोऽयं प्रसादोदया चण्डी त्वच्चरणात् भुजार्चनविधौ बिल्वीदलो लुण्ठना तृतीयस्कण्ठककोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुकरा ते दण्डाकुश चापकुलिश श्रीवत्समस्याङ्कितः जायन्ते पृथिवी भुजा कथमिवां भुजप्रभयमानिभिः विप्राक्षोनिभुजो विशतदितरे क्षीराजमध्वासवे स्तां देवी त्रिपुरे परापरमयी सन्तर्प्य पूजाविधौ यां यां पार्थयते मनास्थितिरदे यां ते शित एव ध्रुवम् तां तां सिद्धिमवा प्रवन्ति तरसा विघ्नैर्विधिना कृता शब्दानां जननी तमत्रिभुवने वाग्वादिनी तेजसे तत्त्वा केशवा सव प्रभृतियोर्व्याविर्भवति स्फुटम् लीयन्ते खलु यत् कल्पविरमे ब्रह्मादयस्तेऽपि मे सा त्वां काचित् चिन्तिरूप महिमा शक्तिपरा गीयसे देवानां तृतीयं त्रयीहुतभुजां शक्तित्रयं त्रिसरा त्रैलोक्यं त्रिपुदी तपोष्करमथो त्रिब्रह्मवर्णस्त्रया यत्किञ्चित् जगति त्रिधात् नियमतं वस्तु त्रिवर्गात्मकं तत्सर्वं त्रिपुरेत् नाम भगवत् तन्वेति ते तथा लक्ष्मीराजकुले जया रणभूयि खेमङ्करी मदनी त्रैव्याददीपसर्पभाज शबरीं कान्तारदुर्गे गिरौ भूतप्रेतपिशाचं बुकुम्बै स्मृतो महाभैरवीं व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां चित्सोल्वै मायाकुण्डलिनी क्रिया मधुमती कलिकला
मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी शक्ति शङ्करवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रीं त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारीतसे आई पल्लवितै परस्परयुतैर्द्वित्रे क्रमाद्यक्षरे कादे ख्यान्तगते शरादिविरथ ख्यातश्चित्ते तैस्वरे नामानि त्रिपुरे भवन्ति कलया न्यन्त्यन्तगो ह्यानि तेभ्यो भैरवपत्नि शतसहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः। बोधैव्यानुपुनं बुधैर्तुर्यं कृत्वा मनस्तगतं भारत्यात्प्रत्यनन् मनसा यत्रादिव्रे ते सुपुटम् एकाद्वे त्रिपदक्रमे कचितस्तत्पादसङ्ख्याक्षरे मन्त्रोदारविधिर्विशेषसहिता सत्सम्प्रदायान्विता सावद्यं निर्वैद्यमस् यदि वा किं वा नया चिन्तया नूनं स्तोत्रमिदं पठेषित नरो यस्यास्ति भक्तिस्तैः सञ्चिन्त्यापि सगो तमान्मनिदृढं सञ्जायमानं हठा तद्भक्त्या मुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मया वेग्नम् येते पञ्चस्तव्यां लघुस्तवा चर्चस्तवो द्वितीय। ओम नमः त्रिपुरसुन्दरे। ओम आनन्द सुन्दरपुरन्दरमात्रमा आलयं मौलो हठेन नीतं महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जीरसिञ्चितमनो हरमम्बिकाय सान्दैर्वे ब्रह्मो भुवनाधिपत्य सम्पत्तिकल्पतरुवस्त्रपुरे जयन्ति एते कवेतकुमुद प्रकरावबोध पूर्णेन्दुवस्तैर्जगत् जननी प्रणमा देवी तुति विचिकरे कृतबद्धया अस्ते वाचस्पति प्रभृतियो पिजडी भवन्ति तस्मान्निसर्जडिमा कतमो मात्र स्तोत्रं तव प्रपुरतापनपत्कर्तुम् मातस्तथापि भवती व्रता पृच्छेत्ते तुतिमहार नवकर्णधार स्तोत्रं भवांस भवच्चरणारविन्द भक्तिग्रहा किमपि मां मुखरीकरोति सूते जगन्ति भवती विभर्ति जागर्ति तत्
क्षयीकृते भवति भवानी मोहं विनयति भवतीर्णदे लीलायुतं जयति चित्रमिदं भवत्या यस्मिन् मनागपि नमा भुजपत्र गौरी प्रसाद मधुरं दृश्यमाददासि तस्मिन् निरन्तरमनङ्गशर प्रकीर्ण सीमन्तिनी नयन सन्तत्या पतन्ति पृथ्वीभुजोऽप्युदय न प्रवरश्यतस्य विद्याधर प्रणतिचुम्बितपादपीठ यश्चक्रवर्ति पदवी प्रणयासे एष तत्पादपङ्कजरज कनजा प्रसादा तत्पादपङ्कजरज प्रणिपातपूते पुण्यैर्नल्पमतिभिः पृथिवी कवीन्द्र क्षीरक्षपा करदकूलहिमा अवदाता कैरेऽपि वापि भुवन तृतीयेऽपि कीर्ति कल्पद्रुम प्रसवकल्पितचेत् पूजा मुद्दीपित प्रीतमा मधुर गीतिं नित्यं भवानि भक्ति उपनीनयन्ति विद्याधरा कनकशैलगुहा गृहेषु लक्ष्मीवशी कर्णकर्मणिका विनीना माकर्षवेतिकर्षेद्मन्त्र निरन्द्रमोतिमिर क्षुदर प्रदीपो देवी तदं निजनितो जयति प्रसाद देवी तदग्नि नखरद्न भूमयूख प्रत्यग्रमोऽपिकरुषो मुदमोदहन्ति सेवानति व्यतिकरे सुरसुन्दरीणां सीमन्तसीं कुसुमस्तव कायितं ये मूर्ध्नि सुप्रयनदीप्तिदीप्तं मध्ये ललाटममरा युधरश्मिक्षेत्रं कृष्णकृचुण्डिहुतभो कनिकानुरूपं ज्योतिर्यदेतदिदम्ब स्वरूपम् रूपं तव सुप्रतिचन्द्रमरीचिगौर मालोकते मनसि वागदे वृतं या निःसीमसु रचना रतनिर्जरेष तस्य प्रसादमधुरा प्रसरन्ति वाच सिन्दूरपाशुपटल चिरतामिवदं तत्ते यशा तुर्रस पिताम्यो ओमीं या पश्यति क्षणमपि त्रिपुरे विहाय व्रीडां मृडां सुदर्शस्तमनु द्रवन्ति मातर्मुहूर्तमपि या स्मरते स्वरूपं लाख्यारस प्रसरतन्तु निवं भवेत्या ध्यायन्नन् मनसस्तव
तमनङ्गता ता प्रद्यम्सीं सुभगतगुणं तरण्य योऽयं चकास्ति गगन नवरत्नमिन्दुं योऽयं सुरासुरगुरु पुरुषा पुराणा यथवा ममार्ध मिदमन्दकृशूनश्च देवी तमेव ततदे प्रतिपादयन्ति इच्छानुरूप मनरूपगुणप्रकर्षं सङ्कर्षणे त्वमनुसरेति यदा विवर्षि जायेत स तु भुवनैक गुरुस्तदानीं देवा शिवोऽपि भुवन त्रयसूत्रधारा रुद्राणि वेद्रुमयीं प्रतिमामिव तां ये चिन्तयन्ति रुनकातिमनन्यरूपां तानीति पक्षुमलदृशा प्रसवं भजन्ते कण्ठावसत् मृद्वा पुलतास्तरुण्य तथरूपमुल्लसित दाढ्यमपुष्प रक्ता उद्भावमेन मदनदैवतमक्षरं या तं रूपहीनमपि मन्मथ निर्विशेष आलोकयन्तिर्नित इम्बुबरा तरण्या ज्ञाताश्चमवतीन इमाशुरवी मालामलदितिर्कल्पशमान् सेन तस्या विलम्बमन्वैद्यमनन्तकल्पम् अल्पैर्दिने सृजसुन्दरिवाग्विलासम् आधारमारुतनिरोधवशीन् येषां सिन्दूररञ्जितसरोज गुणानुकारी तीव्रं हृदे सुप्रतिदेवि वपुस्तदीयं ध्यायन्ति ता निःसमीहितसिद्धसा आद्या तामेन्दवीमिव कला अमनुलावदे एष उद्भासिता भरतलामबलो पियन्ता सद्यो भवानि सुधिया कवयो भवन्ति तां भावना हितधियां पुलकानदेनु तां व्यापिनीति समना यतिकुण्डलीति तां कामिनीति कमलेति कलावतीति तां मालिनीति ललितेति पराजितेति देवी स्तवन्ति विजयेति जयेतुमीति ये चिन्तयन्तिरुन्मण्डलमयवर्ति रूपं नवतमां नव्यावकपङ्कपिङ्गं तेषां सदैव कुसुमा युधवानभिन्न वक्षस्थला मृगदृशो वशगा भवन्ति उत्तप्ते हेमरुचिरे त्रिपुरे वनीः चेतश्चिरन् तनमगौ गवनं वृणीः कारागृहे निगडवन्दनपि जितैश्च तत्सं श्रतोजितमे निगडास्तुटन्ति शर्वाणि सर्वजन वन्दितपादपद मे पद्मचद छवि
विडम्बितनेत्रलक्ष्मी निष्पापमूर्तिजनमा नसराजहंसि हंसि तमापदम् एकविदां जनयस्य तथरूपैकनिरूपन प्रणीत बन्धुदृशोस्तद्गुण ग्रामाकर्म नरागिता शमनयोस्तत्संसृति चेतसि तत्पादार्चन चातुरी करयुगे तत्कीर्तनं वाचि मे कुत्रापि तत्सुपासन विस्मृता मे देवि मा शम्यतु उद्दामकां परमार्थ सरोजषण्ड चण्डदितिमुपासित षट्प्रकार मोहदीपेन्द्र कदनोदितबोध सिंह लीला गुहां भगवती त्रिपुरां नमामि गणेशवटकस्तुता रतिसहायिका मानिता सम्रारिवर्विष्ठरा कुसुमबान मानेर्युता अनङ्गकुसुमा दिवि परिवृता त्रिसिद्धैस्त्रिभिः कदम्बवन मध्यगा त्रिपुरसुन्दरी पातु नः ब्रह्मेन्द्र रुद्र हरिश्चन्द्र सहस्र रश्मि स्कन्दपानन हुताशन वन्दिताय वागीश्वरी त्रिभुवनेश्वरी विश्वमाता अन्तर्बहिश्च कृतसंस्थितये नमस्ते या स्तोत्रमेतत् अनुवासरमीश्वराय श्रेयस्करं पठति वा विद्वा शृणोति तस्यैप्सितं फलति राजविरीडिते स जायेत् स प्रीतमो हरिखेनेक्ष नाना घटस्थवस्तुतिः। ओम नमः त्रिपुर सुंदरी देवी त्र्यंबकपत्नी पार्वती सती त्रैलोक्य माता शिवे शर्वाणि त्रिपुरे मृडानि वरदे रुद्राणि कात्यायनी भीमे भैरवी चण्डी वरिकले कालक्षये शूलिनी तत्पादप्रणतान् ननिन्य मनसा पर्याकुलान् पाहि नः उन्मत्ता इव सग्रा इव विष व्यासक्तमूर्च्छा इव प्राप्त प्रौढमदा इवातिविरह ग्रस्ता इवार्ता इव ये ध्यायन्ति शैलराजतनया धन्यास्तमयेक्रा घृता सत्यक्तोपाधि विवृद्धराग मनसो ध्यायन्ति ब्रुवा देवी तां सकलदेवया प्रणमति क्षोणीव्रतस्तं नमः राजन्म सुभ्रद अग्निपीठविलटत् कोटिरकोटिछटा यस्तामर्चति सोर्चते सुरगणे या स्तौति स स्तूयते यस्तां ध्यायति तं सम्राट् विदुरा
ध्यायन्ति वामब्रवा ध्यायन्ति क्षणमपि त्रिपुरे हृदे त्वां लावण्य यौवनदनैरपि विप्रयुक्ता ते स्फुरन्ति ललिता यत लोचनानां चित्तैकवितलिखित प्रतिमा पुमां सा एतं किं नु दृशा पिबामित विषाम्याशाङ्गमं निजे किं वां निगलामिनेन सहसा किं वै कथा आश्रे तस्येथं विवशो विकल्पघटना भूतेन योषीजना किं तद्यन्न करोति दे हृदये यस्य तमा वर्तसे विश्वव्यापिनी यद्वदीश्वर्यते स्थानाव अन्याश्रया शब्दाशक्तिरिति त्रलोकजननी तयेव तथस्थिते इत्थं सत्यपि शक्नुवन्ति यद्विमा क्षुद्रारुजो बाधितुं तद्भक्तानपि न शक्नोषि चरुषा तद्देवि चेत्रं महः इन्द्रोर्मध्यगतां मृगां सदृश छायामनोहारिणी पाण्डुत्फुल्लसरोरुहा सनगतां स्निग्धप्रदीपच्छविं वर्षन्तीममृतं भवानि भवतीं ध्यायेति ये देहिना ते निर्मुक्तरुजो भवन्ति विपदा रोचन्ति तान् दूरता पूर्णेन्दुशकलैरिवातिबहलै पीयूषपूरैरिव क्षीराब्दे लहरी बरैरिव सुधा पङ्कजपिण्डैरिव प्रालेयैरिव निर्मितं तव वपु ध्यायन्ति ये श्रद्धया चिन्तान्तर्निमिता तथापविशदस्ते सम्पदं विव्रती ये संस्मरन्ति तरलां सहसोल्लसन्ति तां भ्रन्ति पञ्चकविदं तरणाकशो न रागार्णवे बहला रागिणीमज्जयन्ति कृत्स्नं जगद्धरते चेतसि तान् मृगाक्ष दाक्षारसनपितपङ्कजतन्तुतन्वी मन्ता संरत्यनुदिनं भवती वाणी यस्तं स्मरप्रतिमं प्रतिमास्वरूपा नेत्रैर्फलैर्मृगदृशो दृशमर्चयन्ति स्तुमस्तं वाचमव्यक्तं किं मुकुन्देन्दुरुचिषं कदम्बमालां बिभ्राणाम् आपादत तललम्बिनी मुरलीन्दोषितपङ्कजासनगतां प्रालेयपाण्डोतिषु वर्षन्तीममृतं सरोरुभो वक्त्रेऽपि रन्ध्रेऽपि च अच्छिन्ना च मनोहरा च ललिता चातिप्रसन्नापि च तामेव स्मृतां स्मरार्यदयिते वाक् सर्वतो वल्गति ददाति इष्टान् भोगान् क्षपयति रिपून् हन्ति
विपदो दैत्यादीन् व्याधीन् शमयति सुखानि प्रतनुते हठादन्तर्दुःखं दलयति विनष्टित विरहं सकृद्याता देवी किमिव निर्वद्यं न करुते यस्तां ध्यायति वेति विन्दति जपत्यालोकते चिन्तय तिन्वेति प्रते पद्यते कलयति स्तोत्याश्रयत्यक्षति यश्च त्र्यम्बकवल्लभे तव गुणा न कर्णयत् यादरात् तस्य शीर्ण ग्रहादुपैत विजयस्तस्यागतो धावति किं किं दुःखं धनुजदलिनी क्षीयते न स्मृताय का कीर्ति कुलकमलिनी ख्याप्यते न श्रुताय का सिद्धि सुरवर्णते प्राप्यते न चिताय कं योगं तयन चिनुते चित्तमालम्बिताय ये देवी दुर्धरकृतान्तमुखं तरस्था ये काली कालगणपाल नितान्तबद्धा ये चण्डी चण्डगुरु कल्मष सिन्धु मग्ना स्थान्यावस मोचीयसे तारयसि शिवतैव लक्ष्मी वशीकरणचूर्ण सहोदराणि तत्पादपङ्कजरजां सुचिरं प्रयोजयन्ति यानि प्रणाममिलिता निननां ललाटे लुम्पत्यदैव लिखिता निन्दुरक्षराणि ह्रीं मुडा किमियं रथैव तपसा देहा परिकिल्क्षते यद्दैर्यज्ञैर्वा बहुदक्षिणे किमितरे रिक्तिक्रियं ते ग्रहा भक्ति चेतविनाशिनी भगवती पादद्वयी सेव्यता निद्रामृत हातपत्र सुभगा लक्ष्मीपुरो धावती याचे न कंचन वञ्चयामि सेवे न कंचन निरस्तसमस्त दैन्यम् सुलक्षणं वसे मधुरमद्य भजे वरस्त्रीं देवी हृदये सुप्रतिमे कुलकामदेवी शब्द ब्रह्ममयी सच्छे देवी त्रिपुर सुंदरी यथाशक्ति जपं पूजां ग्रहण परमेश्वरी नन्दन्त साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा दर्शनात् पापशमनी जपान मृत्यु विनाशिनी पूजिता दुख दौर्भाग्य हरा त्रिपुर सुंदरी नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलां भवानी भवसंताप निर्वापन सुदानदी मंत्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्गतं तया तत्क्षमतां देवी कृपया परमेश्वरी केतिष पंचदशं घटस्थो तृतीया समाप्ता। ॐ अम्बस्तव चतुर्था ॐ त्रिपुरसुन्दरे ॐ यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणी विद्येत्यां क्षत्रियः शिवदो
वदन्ति तामरर्गपल्लवितशङ्कररूपमुद्रां देवीमनन्ये शरणं प्रपद्ये। अम्बस्तवेषु तव तावद्कर्त्रकानि कुण्ठीभवन्ति वचसामभिखुन्फनानि। डिम्बस्य मे कृतिरसावसमञ्जसपि वात्सल्यनिघ्नहृदयो भवती दिनोति। व्योमेति बिन्दुरितिना द्वयतीन्दुले एका रूपेति वा भवतनु रीतिमात्रकेति। निःस्यन्दमानसुखवो दुसदा स्वरूपा विद्योतसे मनसि भाग्यवतां जनानाम्। आविर्भवत्पुलकसन्ततिभिः शरीरे निःस्यन्दमान् सलिलैर्नयनैश्च नित्यं वाग्भिश्च गदपदाभिरुपासते ये पादौ तां भुवने श्रुतैव धन्य। वक्त्रं यदुद्धतमवेष्टते भवेत्यात्वयं नमो यदपि देवी शिरा करोति चेतश्च यत्तै परायणमम्बतानि। तस्यापि कैरपि भवन्ति तपो विशेषे मूलालवालकोरा दुदिता भवानि। निर्वेदिषत्सरसया नितडिलतेव भूयोऽपि तत्र विशसद्रवमण्डलेन्दु। निःस्यन्दमानपरमामृततोयरूपा दग्धं यदा मदनमेकमनेकदा आते मुग्धा कटाक्षविद्र कुर्यां चकार। दत्ते तदा ब्रवीति देवि ललाट नेत्रं सत्यं प्रिये मुकुलीकृतमिन्दुमौली। अज्ञातसम्भवमना कलितानुभवायु भिक्षुं कपाल नमवा समवदति। पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो भवेत्या शम्भुं कये बुबुधे गिरिराज कन्या। चर्माम्बरं च शवभस्मविलेपनं च भिक्षाटनं च नटनं च परेत् भूमौ। वेतालसं हतिपरे गृहीता च शम्भो शोभां बिभर्ति गिरिजे तव साहचर्या। कल्पोपसंहरणकेलिषु पण्डितानि चण्डानि खण्डपरशोरपिताण्डवानि। आलोकनेन तव कोमलितानि मातर्लाशात्मना परिणमन्ति जगद्विभूते। जन्तोरपैष्टं तनोः सति कर्मसामि निशे
क्षिपाशपटल छिद्र निमीश कल्याणिदय शिकटाक्ष समा श्रेण कारुण्यतो भवशिषां भव वेद दीक्षा मुक्ता विभूषणवती नव्य द्रुमाभा यश्चेतसे सुभ्रष्टा रक्ते संज्ञा एकासैव भुवन त्रयसुन्दरीणां कन्दर्पतां वृजितपञ्चशरीं विनापि ये भावयन्ति मृत्वा शिबिरं सुजालै प्राप्यायमान भुवना ममृते शरीं तां ते लङ्घयन् ननु मातर लङ्घनीया ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि कालकक्षाम् या सपाटिका गुणपुस्तककुण्डिका अड्यां व्याख्यासमुदितकरां शरदिन्दुषु उभ्रां पद्मासनां च हृदये भवतीमुपास्ते माता सविष्वक्वितार्किक च वर्ति बरहावतंस युतबर बरकेशपाशां गुंजावली कृतघनस्तनार शोभां श्यामां प्रभा अलवदन सुकुमार हस्तां तामेव नो मिशवरीं शवरेशजायां अर्धेन किं नवलता ललितेन मुक्ते कृतं विभो परशुमर्दमिदं तयेति आलीजने परिहासवचांसि मन्ये मन्दस्मितेन तव देवि जडी भवन्ति ब्रह्मांड बुद्ध कदम बकसंकलोयं मायोदधीर विविध दुःख तरंग माला आश्चर्यं झटिति प्रलयं प्रयाति तत्ज्ञानसं तटमहा बड़वा मुखा दाक्षायणी कुटिलेति गुहा नीति कात्यायनी कमलेति कलावतीति एका सती भगवती परमार्थतोऽपि संदृश्यसे बहुविधा ननु नर्तकी आनन्दलक्षणमना हतनां निधि ईश नादात्मना परिणतं तव रूपमी ईशे प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानं संशन्ति नेत्र सलिले पुलकैश्चदन्या तं चन्द्रिका शिशिननेग्म रुचो निचस्तं तं चेतनास पुरुषे पवने बलं तं साधुतास सलिले शिखिनी तं उष्मा निस्सारवे तटकिलं तदते यदीश ज्योतिषीयदिव्य चरन्ति यदन्तरेशं सूते पयांसि यदयर्धरणीं च दैते यथवाति वायुरन्लो
यदुदर्चरास्ते तत्सर्वमम्ब तव केवलमागेव संकोचमेच्छसि यदा गिरिजे तदा निवाक्तर्कयोस्तमसि भूमिर्नाम रूपां यथवा विकाससम्पयासि यदा तदानीं तत्नाम रूप गणना सुग्रीववन्ति भोगाय देवि भवतीं कृतना प्रणम्य भ्रूं किङ्करी कृतसरोजग्रा सहस्रा चिन्तामणि प्रचयकल्पितकेलिचले कल्पद्रुमोपवन एव चिरं रमन्ते हन्तुं तमेव भवसि त्वदनीनमीचे संसारताप अखिलं दय्यापशु न वैकतनी किरणसम अतिरेव शक्ता धर्मं निजं शमितं निजेव वेष्ट शक्ति शरीरमदि दैवतमन्तरा आत्मा ज्ञानं क्रियाकरणवा संजालमे इच्छा ऐश्वर्यमा यतनमा वरनानि च तं किं तन्न यत् भवसि देवि शशां मौले भूमौ निर्वृत्तिरुदिता पैसे प्रचेष्टा विद्यानले मरति शान्ति रतीत शान्ति व्योमनीतिया किल कला कलयन्ति विश्वं तासां विदूरतरमं पदं तदीयम् यावत् पदं पदसरोजिगं तदीयं नाङ्गीकरोत् हृदयेषु जगत् शरण्ये तावत् विकल्पजटिला कुटिलप्रकारा तर्कग्रहा समीनां प्रलयं नयान्ति यद्देवयान् पुत्र्यान् विहारमेके कृत्वा मना करणमण्डलसार्वभौमं यानि निवेश तव कारणपञ्चकस्य पर्वाणि पार्वती नयन्ति निजासनतम् स्थूलासुमूर्तिषु मही प्रमुखासु मूर्ते तस्याष्टनापि तव वैभवम्बये ईशा पत्या गिरामपि न शक्यते वक्तुं सा सेतुता किल मयि ते क्षितव्यम् कालाग्निकोट ऋचम्बषडद् शुद्धा बाप्ला वनेषु भवति अमृतोग्रवेष्टं श्यामां घटस्तन्तटा सकलीकृतौ च ध्यायन्ते जगतां गुरुवो भवन्ति विद्यां परां किञ्चितं वरं केचि आनन्दमे किञ्चित् कतिचेश्च मायां त्वं क्षमां हुरपरे वयमामनां साक्षात् पारकरणां गुरुमूर्तिमे वलयदलनीलं
बर्बर स्निग्ध केशम प्रस्तुतर कुचबारा कांत कांतावलग्नम किमिह बहु विरुक्त तत्स्वरूपं परम न सकल भुवन माता संततम सन्निधत्ताम्। यति पंचस्तवम् चतुर्था अम्बस्तव समाप्त। ओम सकल जननी स्तव पंचम। ओम त्रिपुर सुंदरी। ओम अजानन्तो यान्ति खेयमविषम् अन्योन्यकले है रमीमाय ग्रंथो तव परिलुठन तासम यना जगन्मात जन्म जर तमा को मुदिवयम् नमस्ते कुर्वाणा शरणमुपयामो भगवती वचस्तर्कागम्य सरसपरमानन्द विभव प्रबोधाकाराय दितितुलितनी लोत्पलरुचे शिवाशा राजाय सतन वर विनमा ये सततम नमो यस्मै कस्मै चन भवतु मुग्धाय महर्षि लुठत गुंजा हारस तन बरन मन्मद लतिका मुदंच वरमांबा कन गुनित नीलोत पलरुचम शिवम पार्थ त्राण प्रवन मृगया कार गुनितम शिवाम अन्व ज्ञान्ति शवरम मन्वेमि शवरी मिथा केशा केशी प्रदन निधना तरक घटना बहु श्रद्धा भक्ति प्रणय विषया चाप्त विद्या प्रसीद प्रत्यक्षी भवगिरिसुते देहि शरणं निरालम्बं चेता परिलुठति पारिप्लवमिदम् शुनाम्बा बहुनीर्वा खर परिषदो वा यदर्शनं कदा केन केति कच्चिदपि न कच्चित् कलयति अमुष्मिन् विश्वासं विजिहि ममानाय वपुषि प्रपदेथा चेता सकल जननी मेव शरणम् अनादन्ता वेद प्रणय रस कापि प्रणयिनी शिवाशा शीर्यत्वं परिणय विदौ देवी गृहिणी सावित्री भूतानाम् अपि यददभूष तनया तदेतत् संसार प्रणयनमा नाटकसुखम् ब्रुवन्ते के तत्त्वं भगवति सदन्ये विदुरस परे माता प्राहोस्तव सदन्ये सुकव्या परे नैतत् सर्वं समविदधते देवी सुधिया सुत एतत् वनमाया विलसितमशेषं ननु शिवे तदित्कोटि ज्योतिर्दितिदलित षड् ग्रन्थि गहनं प्रवेष्टं सादारं पुनरपि सुधा वृष्टि वपुषा
किमपेष्टात्रिशत् किरणसकली भूतमनीशम् भजेदाम श्यामं कुचभरनतं भरभरकचम् चतुष्पत्रान्ता षट्दलभगा पटान्तस्त्रिवलया सुप्रहत् विद्युत् वाहिनी द्युमन्त्युताभ दितियुते षडशं भित्पादो दशदलमथ द्वादशदलम् कलाशं च दयशं गतवती नमस्ते गिरिसुते कुलं केचित् प्राहुर्वपुरकुलमन्ये तव बुधा परे तत् संवेदं समभिदधते कौलमपरे चतुर्नाम पेषां परिकिमपि प्राहुरपरे महामाय तत्तं तव कथममि निश्चिनुमहे षडाधार ज्ञानी प्रलयरवि कोटिप्रतिरुचा ऋचा भस्मीकृत्य स्वपदकमल प्रविशिरसां च तन्वान् शैवं किमपि वपुरिन्दीवर रुचि कुचाभ्यां नम्रा शिवपुरस्कारो विजयते प्रियङ्गुषामाङ्गी रुणतरवसा किसलया समन्मीलन मुक्ता फलबहुल नैपैत्य स्तनद्वन्द्वस्फार तबक नमितां कल्पलतिकां सकदायन तस्तां ददति शिव चिन्तामणिपदम् प्रकाशानन्दाभ्यां विदितचरीमध्यपद प्रविशेतत् बन्धं रविशशिसमाख्यं कवलयन् प्रविशोर्ध्वं नादं लयदहन भस्मीकृतकुला प्रसादात्ते जन्तु शिवमकुलमम्ब प्रविशति षडाधारवर्तैर परिमितमन्त्रो मे पटलैः चलन्मुद्रा फेनैर्बहुविदल सदैवतशिषे क्रमस्रोतो विस्तुं वहसि पर नादामृतनदी भवानी प्रत्यग्रा शिवचिदमृताभि प्रणयिनी महीपाथो वहिनी श्वसन वियदात् मेन्दुर्वी वपुर्भिर्ग्रस्तांशैरपि तव कियानम्ब महिमा अमूल्या लोक्यन्ते भगवति न कुत्र विनतराम् अवस्थां प्राप्तानि तये तु परम व्योम वपुषि मनुष्यास्तिर्यश्चो मरुत इति लोकत्रयमिदं भवाम्बोधौ मग्नं त्रिगुणलहरीं कोटिलुठितम् कटाक्ष चेदत्र कचन तव माता करुणया शरीरी सद्योऽयं व्रजति परमानन्दतनुताम् कलां प्रज्ञा माद्यां समयमनुभूतिं समरसां गुरुं पारं परियं विनयमुपदेशं
शिवकथां प्रमाणं निवानं परमतिभूतिं परगुहां विधिं विद्या माहु सकलजननी मेव मुनया प्रलीने शब्दोगे तदनुविरते बिन्दुविभवे ततस्तत्त्वे चाष्ट ध्वनिभिरनुपादिन्युपरते श्रुते शाक्ति पर्वण्यनुकलित चिन्मात्र गहना स्वसंवित्तिं योगी रसयति शिवाख्यां परतनुम् परानन्दाकारा निरवधि शिवैश्वर्यवपुषम् निराकार ज्ञान प्रकृतिम् अन्वच्छिन्न करुण सवेत्रीं भूतानां निरतिशय दामा सपदपदां भवो वा मोक्षो वा भवतु भवती मे भजताम् जगत्काये कृत्वा तमपि हृदये तश्च पुरुषे पुमांसं बिन्दुस्थं तमपि परनादाख्यगहने तदेतत् ज्ञानाख्ये तदपि परमानन्दविभवे महाव्योमकारे तदनुभवशीलो विजयते विदे विद्ये वेदे विविधसम ये वेद जननी विचित्रे विश्वादे विनय सुलभे वेद गुलिके शिवागे शीलस्थे शिवपद वदानि शिवनिधे शिवे मातर मह्यं तैवितर भक्ति निरुपमा विधेर्मुण्डं रत्वा यद् करुत पात्रं करतले हरिं शूल प्रोतं यद् गमयिदं सा भरनताम् अलं चक्रे कण्ठं यदपि गरले नाम्बगिरीशा शिवास्थाय शक्तेस्तदिदमखिलं ते विलसितम् विरिञ्चाख्या माता सृजसि हरिसंज्ञा तमवसि त्रिलोकीमृदराख्या हरसि विददासि शरदशां भवन्ति सादाख्या शिवयसि च पाशोगुदलिनी तमेवैका नेका भवसि कृतवेदर्गिरिसुते मुनीनां चेतोभिः प्रवर्तितकाशा यैरपि मना अशक्ये संस्पृष्टं चकितचकितैरं सततं श्रुतीनां मूर्धाना प्रकृतिकठिना कोमलतरे कथं ते विन्दन्ते पदकिसलये पार्वतीपदम् तदेदल्ली नित्या अमृतसरितं पाररहितां मलोत्तीर्णा ज्योत्स्ना प्रकृतिमगुण ग्रन्थिमहना गिरां दूरा विद्या भविनतकुचां विश्वजननी अपरियन्तां लक्ष्मीम् अभिदधति सन्तो भगवती शरीरं चित्यम्बा प्रकृतिरचितं केवलमिदं सुखं दुःखं चायं कलयति पुमान् चेतनयति सुपुटं जानानोऽपि प्रभवति न देहि रहितुम्
अहंकारं तव समय वायो गिरिसुते। पिता माता भ्राता सुहृदनुचरा सद्मगृहिणी वपुपुत्रो मित्रं धनमपि यदा मां विजयति तदा मे बिन्दाना सपदि वै मोहान्ध तमसं महाजोत्स्ने मातर्भवकरुणया सन्निधिकरी। सुतादक्ष साधो किल सकलमातस्तमोद्भू सदोषं तं हित्वा तदनु गिरिराज तनया अनादन्ता शम्भोर्पृथगपि शक्तिर्भगवती विवाह जया सीतः चरितं वेत्ति तव कनास्तदीप्तीनां रविशिशिकृशानुप्रभृतया परं ब्रह्म क्षुद्रं तव नियतमानन्दकनिका शिवादे खित्यन्तं त्रिवलयतनो सर्वमुदरे तवास्ते भक्तस्य सुभ्रशिहृदि चित्रं भगवती तया यो जानीते रचयति भवते सततं तयेवैच्छत्यम्ब तमसि निखिला यस्य तन्वा गताश्चाम्यं शम्भोर्वहति परमं व्योम भवति तथाप्येवं हित्वा विहरति शिवस्येति किमिदम् पुरा पश्चादन्तर्बहिर्परिमेयं परिमितं परं स्थूलं सूक्ष्मं सकुलमकुलं गुह्यमगुह्यम् दवीयो निधीया सदसदित विश्वं भगवतीं सदा पश्यं त्याग्यां वहसि भुवन क्षोभजननी मयूखा तूष्णीव ज्वलनइव तद्दीप्तिकणिका पयोदो कल्लोल प्रतिहितमहिं नीव वृषिता तुदेत्योदित्याम्ब तयि सह निजस्तत्त्वककुलैर्भजन्ते ततोगा वृषममनुकल्पं परिवशा विदुर्विष्णुर्ब्रह्मा प्रकृतिरनुरात्मा दिनकरा स्वभावो जैनेन्द्रा सुगतमुनिराकाशमनिलम् शिवाशक्तिर्चेति श्रुतिविषयितां तामुपगतां विकल्पैर्विष्टाम् अभिददति सन्तो भगवतीम् प्रवेशेशं मार्गं सहजदय्या दैशिकदृशा षडदोदो तोग क्षुद्रगणना तीर्थकरुणा परानन्दकारा सपदि शिव यन्तीमपि तनुं समात्मानं धन्या चिरमुपलभन्ते भगवती शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं तमसि समया तं समयिनी तमात्मा तं दीक्षा तमयमनिमादिर्गुणगणा अविद्या तं विद्या तमसि निखिलं तं किमपरं पृथक् तत्तं ततो भगवति न वीक्षा महिमे असंख्ये प्राचीनैर्जननि जननैर्कर्मविलया गते जन्मन्यन्तं गुरुवपुष मासादिगिरिशम् अवाप्याज्ञं शैवीं
क्रमतनुरपेतो विदितवान् नयेयं त्वत्पूजा स्तुतिविरचिने नैव दिवसम् यच्छठपत्रं कमलमुदितं तस्या कर्णिकाख्या योनिस्तस्या पृथ्वीमुदरे यतोऽङ्कारपीठम् तस्मिन्नन्ता कुचवर्णतां कुण्डलिता प्रवृतां श्यामाकारां सकलजननीं सन्ततं भावयामि भुवि पयसकृशानो मारुतेखे शशाङ्के सवितरि यजमाने पृष्ठदा शक्तिरेका वहति कुचपराभ्यां या विनम्रापि विश्वम् सकलजननी सा त्वं पाहि मामित्यशम् सकलजननी सा त्वं पाहि मामित्यशम् ॐ इति श्री पञ्चस्तवं सकलजननीस्तव पञ्चमा समाप्तम्